digital and financial inclusion, it's mind-boggling. एक हमारी स्वनिधि scheme, I want to talk about that. The most vulnerable sections of our society during the pandemic were the रेडी पटरे पे जो अपना धंधा कर क्यों? Because traditionally they have gone to money lenders and taken loans at 20%, 30%. All right? But जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दी, लोग कोई घर से आ ही नहीं रहा. आप लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपको तो सैलरी मिलती रही. जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता रहा. बाकी जो माइग्रेंट लेबर है, वो यहाँ से बैठ के घर वापस चली गई. ये बेचारा फंस गया वहाँ पे, ना लोन दे. तो मोदी जी केम अप विद अ ब्रिलियंट स्कीम. इट्स कॉल्ड द स्वनिधि स्कीम, विच इज a scheme of financial inclusion, making those people entrepreneurs. पहला लोन 10,000 का, अगर उसको टाइम से वापस करा दो, अगला लोन 20,000 का, उसको समय से वापस कर दो, लौटा दो, तीसरा 50,000 का. भाई साहब, rolled out within 1 month, it had started. Today the number of people who have availed of loans are better 58 lakhs. And it's going up. We have a portal. If I answer a question in Parliament today, it's one figure. Next day, the figure has changed because the figure has gone up. Second loan, third loan. And there are two studies which are fascinating. आप लोग उसको देखिए. एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट है कोई सौम्या कांति घोष. उन्होंने एनालिसिस किया. उन्होंने कहा पहला लोन लिया था, वो तो जो कर्जा था उसको लौटाने में, they look at their credit standing, their credit, and they've become beneficiaries of 8 other schemes of the government. उनका डेटा अपलोड हुआ. सो यू हैव गॉन थ्रू द स्वनिधि स्कीम ऑफ ब्रिंगिंग दिस पीपल हु आर एट द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी. आपने इनका डेटा अपलोड करके इनको फॉर्मल इकोनॉमी में ले आए और इनको एक इकोनॉमिक पावर दी. अब उससे क्या हुआ, उनको सम्मान भी मिलता है. लोकल अथॉरिटीज, पहले क्या होता था, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे कि जो कमेटी आ गई बेचारे उनके सबके उठा के, वो जो व्यापार करते थे उठा के वो ले जाते थे, एंड देन उनसे पैसे लेकर लौटा देते थे. मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. टुडे दे हैव वेंडिंग जोन्स, दे हैव सर्टिफिकेट्स, दे कैन होल्ड दैट अप, एंड दे हैव द बैकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो आई से वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज. नाउ इफ यू गो टू अ हॉस्पिटल, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग, हॉस्पिटल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स आर. So, because a lot of quacks get into it. A lot of people are claiming to run hospitals. Nobody checks their degree. But now you get a regulator in. I mean, this is where you're moving. I tell you, I've spent 39 years in the foreign service, 6 years after that, 45, और मेरे मंत्री बने हुए 7 साल हो गए. मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी ये किसको कहते हैं, फिनटेक कहते हैं ना, जो इंडिया में कहीं नहीं है. आप कहीं भी जाइए, आप पेमेंट करिए, क्लिक 2 मिनट में आ जाता है. यार मैं I shouldn't talk like this. In one of the very advanced, the most advanced country, ऐसा पता ही नहीं लगता था यार वो पेमेंट हुई नहीं हुई, मेरे अकाउंट से हो गई कहीं और हो गई. दिस इज फार मोर एडवांस. और अभी G20 के लिए जो अब डेलीगेट्स आए थे, आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट की वो टेक्नोलॉजी वहीं पे. सो इंडिया वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड. We take the next question. Good evening, sir. My name is Dr. Neeraj Yadav. I have done my MBBS from Varanasi Medical College, and now I am doing my DNB from Max College, Max Super Specialty Hospital. So, sir, what I have observed, there is very great difference in working of a government setup hospital and a private setup hospital. So, sir, don't you think that we should increase the GDP percentage in a health sector? We are currently spending around 2.2% only. देखिए, मैं जब ब्राज़ील में एम्बेसडर था तो मैं ब्राज़ील के हेल्थ सेक्टर के हेल्थ सिस्टम को देख के बहुत वेरी इन्फ्लुएंस बाय. तो मैंने तो उस समय कहा था, मैं बात कर रहा हूँ 2008, मैंने तो कहा था 3% मिनिमम होनी चाहिए यार हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग. पर भाई साहब जा रही है वहाँ पे, ये जा रही है. बिकॉज टुडे circumstances are taking you, plus you have a government committed to that. I mean, if you look at what the ICMR, अभी you know this new starts कि क्या वो JN1 है. Look how quickly you are off the mark. You have done testing, you have done other things, you're developing things, and you are if I'm not mistaken, we produced more than 224 crore vaccines, and we administered them, almost all of them free, almost all. And you also supplied, agar dunya bhar mein 193 countries hai, you supplied to 100 of them. So today the health sector GDP is not
only a function of government decision making. Today you are witnessing something fascinating happening. जो हमारे दोस्त यार थे जो लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में वहाँ थे, जो नहीं भी लौटे हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ अपने एक हमारे डॉक्टर शर्मा है इन आई थिंक इज इन वन ऑफ द मेजर हॉस्पिटल, ही इज ओपन अ मेजर हॉस्पिटल इन जयपुर, अदर पीपल हैव डन. सो एक फ्लाइट जो हो रही थी वेस्टवर्ड, टुडे आई थिंक दैट बैलेंस हैज बीन रिसीव्ड. यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग बैक, partly also because they see economic opportunity here. If it had not been for economic opportunity, I'll tell you frankly, a good professional can be committed, but he's not into philanthropy. आप जितना मर्जी करना चाहे, पर आप you also have to get a return on your education, on your work and on your working capital. Take the next question. So good evening one and all. I am Professor Kashyap Dubey from Jawaharlal University School of Biotechnology. So I have just question related to the ethanol production. You talked about the second generation ethanol production from agricultural waste. But the requirement, as you said, like 10% is going to, in the coming years, 20%, maybe in future 30 to 40%. So the ethanol production from these waste is need scaling up, which is not like, as you mentioned about two production unit, one is in IOCL, another is in Kasipur, is producing from agricultural waste. So this is need attention, I think, to have more bio-based industry. So biomass-based ethanol production, and I think it is needed because pollution came then start thinking. देखिए, technology of making ethanol from parali or agricultural waste, उसमें कोई doubt नहीं है. Yes. It's an indigenously manufactured plant also. Yes. We are now also going into third generation, making it from gases. वो imported थोड़ा सा technology collaboration. हमारी प्रॉब्लम क्या है, पानीपत को भी कराने में हमारी प्रॉब्लम है एग्रीगेशन में. ना तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल वेस्ट की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है. उस एग्रीकल्चरल वेस्ट को इकट्ठा करके आपको देना है. तो मैंने जब ये प्रॉब्लम हुई शुरू, तो मैंने मनोहर लाल जी को फ़ोन किया, खट्टर जी को फ़ोन किया. मैंने कहा आपसे कुछ सहायता चाहिए. बोला आई वेरी गुड रिलेशन, बताइए क्या करना है. मैं कहा थोड़ी सी आप इंसेंटिव दीजिए कि कितना भैया, 1,000 रुपया पर टन, पर मेट्रिक टन, और कर दिया. शुरू हो गया. बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल इशू है यहाँ. अब वो जो पानीपत का प्लांट है, इट टेक्स नॉट ओनली फ्रॉम देयर वो नेबरिंग स्टेट से भी आ रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इसमें प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम है कि हमारा जो समय लगता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन टू द सेटिंग अप ऑफ द प्लांट. देखिए, किसान पराली क्यों जलाता है, इसमें मैं अपनी पॉलिटिक्स बाहर रखना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू ब्लेम मिस्टर एक्स और वाई. पहले वो कहते थे पंजाब से आती है, फिर जब उनको सैटेलाइट इमेज दिखाई, वो कह रहे नहीं, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई. फिर कहते पंजाब से नहीं आती, हरियाणा से आती है. जब सैटेलाइट इमेजरी दिखाई और लाल स्पॉट ये तो भाई पंजाब में पड़ रहे हैं, फिर कुछ और जवाब दे देते हैं. देखो, इसमें अगर इफ वी पोल्यूट द एयर, वी आर ऑल गोइंग टू सफर. सिंस आई एम ओल्डर देन यू, आई विल सफर मोर देन यू, बट वी आर ऑल गोइंग टू सफर. देयर इज नो एग्जिस्टिंग ऑन. तो इसको वॉर फुटिंग पे कैसे किया जाए, मुझे लगता है ये हो रहा है, पर हो रहा है इसमें यू नीड ऑल द इकोनॉमिक. अब हमारी वेस्ट मैनेजमेंट क्या प्रॉब्लम थी और अभी भी क्या प्रॉब्लम है. जो कचरे पे बैठा वो कहता है यार तुम इसको ले जाओगे, इस पे तुम पैसा बनाओगे, टू यू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, पहले मेरे को पे ऑफ करो. नो ना, हमने किया. मैंने तो पॉलिटिकली आई हैड टू इंटरवीन विद द देन गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र. वी गेट इट डन. हो रहा है, but I'd like to do it at a faster pace. The good news about ethanol is that we are diversifying the feed, the source. Today you can make ethanol from a number of things. I had a big argument at home. I have a wife who's a colleague and she said, ये देख लेना कहीं food security में ना फंसा दे आपको. भाई सही है. But that's why I'm saying you make it from makkah, you make it from used oils, you make it from starchy sorghum, you want to make it from क्या मैनियोक क्या कहते हैं उसको, जो करना करो. आपको टपियोका, आपको एक बार एग्जैक्टली आपको एक बार इकोनॉमिक रिटर्न अगर मिल रहा है तो वो दैट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव. देन पीपल विल नॉट वांट टू बर्न दिस थिंग. बट आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉलिटिकल थिंग. आई मीन इफ समबडी थिंक्स कि मेरा हक है टू बर्न इट, देन it should be condemned. I mean, it should be, you should name and shame them. I have one more question, then I'll have
नमस्ते सर, मेरा नाम कृष्ण जांगिड है, मैं जयपुर से हूँ और दिल्ली में मीडिया कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। सर, जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के लिए कहते हैं, तो 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी। और भारत का 65% आबादी करीब 35 साल से कम की है। सर, मेरी एक चिंता है, वो चिंता यह है कि हमारी मैक्सिमम जो यूथ पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट कर, मतलब वहां उनकी एनर्जी लग रही है। हालांकि सरकार के बहुत प्रयास है, जैसे स्टार्टअप का आज इंडिया एक हब है, इसके अलावा आपने स्वनिधि स्कीम बताई, ऐसे कई है। लेकिन सर, जैसे आप एक डिप्लोमेट के तौर पर 39-40 साल आप फॉरेन सर्विस में रहे, सर आपका क्या अनुभव है दुनिया में और किस तरह से वहाँ युवाओं की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स में? नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है ना, मैं लगता है आप मेरे साथ बैठिए, इसकी मैं फोरेंसिक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करूँगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10-15 साल में, और ख़ास करके हमारे समय में 10 साल में, गवर्नमेंट सर्विस को आपने बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। और साथ में ये भी कह दिया है, कहीं आपने साइकोलॉजी में इसमें डाल दिया है कि गवर्नमेंट सर्विस में सिक्योरिटी है, दाम भी अच्छा है, मतलब कि यू गेट पे इज वेरी गुड, सिक्योरिटी है, और समथिंग आई शुड नॉट बी सेइंग, काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। प्राइवेट सेक्टर में आपसे 3 गुना काम भी करवाएंगे, पैसे भी थोड़ा कम देंगे, but that doesn't mean that our youth is going there. No, if you look at the number of startups, that will answer the question yourself. Look at what are they called, those unicorns. Look at the number of unicorns being produced in a year. But more than that, this government employment is a good sign, but only up to a point. It is a good sign if you want to lead a reasonably secure life. Even government offices, people have to work hard. But I'm saying something else. The kind of people you guys are going to be influencing, they're not going to be happy with government jobs. A really good person wants more. That good person will then push at the edges. And that pushing at the edges is what produces innovation. Yeah. अब मैं जाता हूँ, जब दोनों मेरे मंत्रालय में कई subjects, I wish I had more time. You should see the kind of startups that there are there. And they are in frontier, cutting edge areas. Very bright minds, not necessarily from, I'm not saying they're all from IIT. अभी यार ISRO की जो team देखो, they are not from those kinds of, they are from regional engineering colleges. And look at the number of women engineers there. So government will have to be a good. I mean, the fact of the matter is that a minister's salary and क्या कहते हैं, MTS कहते हैं, उसमें बहुत कम gap रह गया. It's a fact. I mean, different thing, a minister will get a house, a minister will get a car, but starting salaries in government are very attractive. So I think it's a little bit of laziness and there. But people in all departments and etc. But look at your private sector is booming, yaar. Your startups are booming. So I think one has to be, government exam के लिए prepare करना, भाई इसमें थोड़ा समय लगेगा. पर पहले देखो, पहले कौन appear होता था? हमारे समय में कौन IAS में appear होते थे exam में, अभी कौन हो रहे हैं? It's a very refreshing thing. People are coming from other parts, and you see that. There's a shift from some of the other professions. Abhi bhai sahab baithe the, you are a PhD from, no, you are a doctor, MBBS doctor, and then he's doing something else. So that has also started a long education, a lot of premium, a lot of innovation in that. So I'm not too worried on that. Sir, if we can take the last question from a woman delegate. 1 minute, I need somebody to make a call. Kuldeep Indra yaar. वहाँ घर ऑफिस में फोन करते 7 बजे किसी को टाइम दिया, उनको बिठाएं मेरे कमरे में. Last question. Thank you. Last but not the least, हमारा भी टाइम आ रहा है. जरूर. Thank you so much. I'm Ayushi Ketkar. I teach at the Special Center for National Security Studies, JNU. 3 quick questions, sir. I would like your views on an important thing, the urban-rural divide and the digital divide when it comes to inclusive growth. Because this is an issue, especially when I deal with border villages. This is a very glaring, divide that you see. Second is I want your views on the efficacy of ranking agencies, whether it's Moody's, Standard & Poor, whatever.
Because most of the time you see this is a big bottleneck when it comes to the image of a nation. So as a minister and as a former diplomat, what is Bharat government's, No, I am on each of these, urban, rural, I may know a little bit, digital divide, even less, and rating agencies. But I'll give you what I think is a honest answer from my point of view. The days of the urban-rural divide are over. It's over. There is a demographic shift which takes place in the normal course of events, because wherever there is even minimal mobility, people will migrate to those areas where there is economic opportunity. So you had that divide taking place like that. Your urban population in 1947 was 17% of the total population. But your total population was only 350 million. Today your total population is 1.4 billion, and that 17% has gone up to what? 30, 33, 34% it will be. दिल्ली की जनसंख्या 1947 में 8 लाख थी. जब हमारे जैसे परिवार के आए रेफ्यूजी बन के दूसरी तरफ से 1951 का सेंसस हुआ, दैट 8 लाख became 17 और 18 लाख. अगर अपना जो सेंसस आएगा कितनी होगी जी दिल्ली की पॉपुलेशन? 2.5 करोड़ तो होगी, 2.5 करोड़ हो जाएगी. So will this continue like this? Yes and no. It will continue up to a while. Then population growth also doesn't take place. As it is, most people in India have down to 1 or 2 children, etc. Many people go out, and then the plateauing, and then it goes down. Today, some of the rural areas, because of better lifestyle prospects, are very attractive for people. Why do people go and move? I mean, some people have, and exactly in the West the same. They started it earlier because they became developed earlier. We lost 190 years because of the colonial domination. अरे मेरे को बताओ, अभी अगर हमने RRTS कर दी, just give you an example. आपको मेरठ दिल्ली, अगर आप दिल्ली को काम में आना और आप क्या 42 मिनट में पहुंच सकते हैं? Why would you want to live here, यार? I mean, I would rather go and live in some place where I have a much better patch of land, I can breathe clean air. So that I think is a problem which I can spend I said I don't know much about it. I know a lot about it because I'm the urban affairs minister. But this problem I think is resolving. Digital divide, you don't have to do anything. वो तो आज 6 साल से बच्चे के लेकर ऊपर जाए, that technology is taking care of it. Now you better make sure that this kind of technological growth is within some restraining this thing. अब हमारे यहाँ तो रेरा हमारा रेरा था, ये कमाल है. जब तक मोदी जी की सरकार बनी, real estate, which is one of the largest employers, which is one of the major GDP contributors, didn't have a regulator. अब हमको ये देखना कि ये सब जो डिजिटल प्रोग्रेस हो रही है, फाइनेंशियल हो रहा है, we need to keep it properly. Rating agencies, तो how honest you want me to be? No, this is a con job. It's a con job. I'm telling you why it's a con job. उनका रिजल्ट पहले होता है और फिर वो करते हैं दिन पे. बट आपकी अगर अपनी स्टोरी बहुत अच्छी है तो कितना वो डिस्टॉर्ट कर पाएंगे? A++, B- क्या कर रहे हैं लोग? और कौन उनकी यहाँ पे समझ है? मैं तो यही बताया ना, वो एक बार हमारे फॉरेन सर्विस में बड़ी फेमस है, हम लोग को टेलीग्राम भेजा करते थे सीक्रेट. तो वो कह रहा जी यहाँ पे जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन हुई, वो कह रहा था कि जी बड़ा ये हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है. तो किसी ने दिल्ली में टेलीग्राम भेजी एम्बेसडर को, यार लुक आउट एज द विंडो, यू सी व्हाट इज हैपनिंग. नो, यू हैव टू बी रियलिस्टिक. मैं तो साफ करता हूँ, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में भी यही होता है. अब ये जो 3 स्टेट इलेक्शंस थी, मैं सबको बोला था, मैंने हम 4 जीत रहे हैं, और 3+ आई थॉट तेलंगाना में वो 55 पर रुक जाएंगे. बट यू नो, talk to the people. ये rating agencies की, are you, when you invest today in India, मैं अभी मुझे अमीर ऑफ कुवैत passed away, so I came in from चंद्रपुर. आपके यहाँ से वो मैं मुश्किल से 9:45 बजे रात को पहुँचा, और I had a message saying you are directed by PM to go to there. वो मेरा जो कोलैबोरेटर रसाल वो मजाक करता कहते जी आधे घंटे में फ्लाइट यहीं से पकड़ ले. मैंने कहा यार घर जाके कपड़े वपड़े तो वो जो फ्यूनरल में पहनने वो तो काले कपड़े ले आए. Talk to people outside.
Do you think anybody gives a damn of what Fitch is saying or somebody else is saying? मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो I'm a I spent 39 in the foreign. People know where there is activity. So everybody is looking at India. Rating एजेंसी पता नहीं क्या करेंगे, अच्छा बोल रही है बुरा बोल रही है, मैं तो देखता नहीं हूँ. But 3 things are important about a country. The businessman knows where to put his money. Please start on that. And the businessman is not a philanthrope or he's not into altruism. He wants a return. You agree? That's one. Second thing is you can judge by the people. Are the institutions there? Has India ever defaulted? Have you ever deprived anybody of taking the profit which he or she has made in his economic entity out? Not, I've never heard a case. Yes, you have disputes. Some people try and get around your tax system, then they abuse you. Yeah, that happens everywhere. But why do they keep coming back here? Because they know India is a good story and is getting to be an even better story. Thank you very much. I would have loved to stay on, but I think you had only budgeted for that much. Thank you, Honorable Minister, sir, for this fantastic dialogue. I'll request our Executive Director of Prabodhini, Dr. Jayan Kulkarni ji, to present the vote of thanks. नमस्कार. जिस तरीके से मुद्दे माननीय हरदीप सिंह जी पुरी ने आपके सामने रखे, जिस तरीके से सवाल आपने पूछा और जिस तरीके का एकेडमिक रिस्पॉन्स सर ने दिया, ये वार्तालाप और भी चलेगा, लेकिन समय सीमा है. आपकी उपस्थिति में सर प्रबोधिनी की तरफ से जो एक ऑर्गेनाइज किए जाने वाला हमारा श्रृंखला का ये प्रोग्राम है विकसित भारत डायलॉग, इसका भी प्रारंभ हो चुका है. प्रबोधिनी परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहाँ आए और इस श्रृंखला का आपने उद्घाटन किया. समाज की सब वर्गों के साथ ये सब विकास यात्रा के पहलू जोड़ने का जिस वर्ग का काम है, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का आप प्रतिनिधित्व सभी लोग करते हैं. हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए आप सभी लोग यहाँ आए, मैं आपका भी हृदयपूर्वक आभारी हूँ. धन्यवाद. Thank you. I hope you are for the first lecture of the You have so many things to tell us. It's okay. Thank you. We'll be